अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी माशाल्लाह थैंक यू जाफर भाई बहुत अच्छी स्पीच थी आपकी हम्म, Yes. yeah शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई या सो आई विल बी कंटिन्यूइंग ऑन द टॉपिक तो मेरी बुक का नाम जैसे वो फर्स्ट स्लाइड में था द अवेटेड सेवियर है और ये दो दैयज आलिम दीनों ने बेसिकली मिलके इस किताब को लिखा है वन इज शहीद मुताहरी और दूसरा शहीद बाकर सदर है बेसिकली सो अब तक हमें बेसिकली इस बारे में बात करें कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इज बीइंग अवेटेड नॉट ओनली बाय शियाज और मुस्लिम्स बट by all the people in general everybody is waiting for a savior बोल के तो लास्ट टू चैप्टर्स में हमें इसके बारे में थोड़े इन्फॉर्मेशन शेयर करे थे इस चैप्टर में बेसिकली ये मेंशन हुआ है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस बेसिकली व्हाट आर सम ऑब्जेक्शंस अबाउट व्हिच आर बीइंग रेज्ड अबाउट इमाम मेहदी बोल के तो मैं थोड़ा हाईलाइट भी करके रखा था बट पता नहीं इसमें क्यों नहीं है तो आई विल जस्ट टच ऑन दीज पॉइंट्स यहाँ पे तकरीबन अराउंड 6 to 7 ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं तो इस नशिस्त में बेसिकली आई जस्ट टॉक अबाउट द ऑब्जेक्शंस इंशाल्लाह आगे चल के ईच ऑब्जेक्शन के बारे में एक डिटेल्ड आंसर प्रेजेंट किया गया इस बुक में विल टॉक अबाउट दैट सो फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो रेज करते हैं लॉन्जिविटी है बेसिकली ये पूछते हैं कि अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वही हैं जो हम लास्ट टाइम प्रूव करे थे कि इस्लाम जो है एक फैक्चुअल और एक डेफिनेटिव फिगर के बारे में बताता जो इमाम मेहदी हैं जो मुंजी हैं जो आके सबको नजात देंगे बोल के लाइक सब लोग अब्स्ट्रैक्ट बातें करते इस्लाम एक फैक्चुअल बात करता तो उस फैक्चुअल पॉइंट जो हमें लास्ट टाइम बोले उसके बारे में ऑब्जेक्शन रेज है वन इज लाइक लॉन्जिविटी तो ये बोलते हैं कि अगर इमाम मेहदी वही हैं लाइक 11th इमाम के जो बेटे हैं जो 255 हिजरी में जिस जो पैदा हुए बेसिकली जो 5 इयर्स के थे जब उनके डैड गुजर गए तो इन दैट केस हाउ इज इट पॉसिबल यू नो पीपल आस्क that it is possible for a person to live such a long life like जब हर इंसान जो होता है नेचुरल लॉ से अफेक्टेड होता है like एक एज के अंदर आता है he has to pass through old ages and then senility and then eventually has to die how is it possible कि इस present day and age में such a long life इमाम मेहदी जी सकते हैं ये such a long life जो है ये impossible है from a factual point of view बोल के longevity is their first objection which people are raising सेकेंड पॉइंट जो बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ लॉज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अल्लाह क्यों एक फॉर द सेक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन अल्लाह क्यों ऐसा कर रहा है अपने नेचुरल लॉस को अल्लाह क्यों सस्पेंड कर रहा है लाइक व्हाई डज अल्लाह वांट टू गो अहेड एंड प्रोलॉन्ग हिज लाइफ सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं बोला कि इज ह्यूमैनिटी अनेबल टू प्रोड्यूस एनी अदर कंपीटेंट लीडर जो नॉर्मल लाइफ जीता जो नॉर्मल आता क्यों कोई एक specific person, एक sort of a partiality, why is it not possible that the role of filling the world with justice and equity be left to a leader who may be born, on the eve of an appointed day and grow like other people? जो normal इंसान की तरह रहता, क्यों ना, वो लाके पूरे world को नजात दे? Why a specific person? That is another, objection which is being raised. थर्ड ऑब्जेक्शन जो रेस करते हैं वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग जैसा मैं पहले अभी आपको बोला था कि अगर हम बोल रहे हैं कि 11th इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम मेहदी हैं जो 255 हिजरी में पैदा हुए और उनके जो डैड थे जो 260 हिजरी में जो गुजर गए राइट सो एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ द चाइल्ड वाज नॉट मोर देन 5 years ऑफ एज और 5 years जो हम भी सब जानते हैं नेचुरली अगर देखेंगे इट इज नॉट सफिशिएंट टू बी ट्रेन्ड रिलीजियसली एंड इंटेलेक्चुअली by his father then how can you say that he is prepared for such a great role जो पूरी दुनिया को इनजस्टिस से लेके जस्टिस की तरफ लेके हाउ इज इट पॉसिबल उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मुस्तफा भाई प्लीज ओके एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज हिज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ये जो बोल रहे हैं कि दी दो अगर हम अज्यूम भी कर लें कि थियोरेटिकली ये पॉसिबल है अच्छा एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल दैट बट इसकी सनद क्या है व्हाट इज देयर साइंटिफिक और रिलीजियस प्रूफ क्या है अकॉर्डिंग टू देम अकॉर्डिंग टू द पीपल हु ऑब्जेक्ट ऐसे एक छोटे मोटे ट्रेडिशंस फ्यू ट्रेडिशंस जिसकी ऑथेंटिसिटी भी आपको उतनी क्रेडिबल नहीं अननोन ऑथेंटिसिटी एट्रीब्यूटेड टू द होली प्रॉफिट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इनफ फॉर सच अ बिलीफ ये बिलीफ जो है बहुत बड़ी बात है तो उसके लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रूफ
वो भी नहीं है बोल के बोल रहे हैं जो पीपल हु ऑब्जेक्ट। सो जस्ट एडिंग अ पॉइंट कि ये पूरे ऑब्जेक्शंस अब रेज हो रहे हैं, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह आगे चल के दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डिले इन अपीयरेंस। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि इफ द लीडर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, अब अगर हम सब बोल रहे हैं कि इमाम मेहदी, जैसा हमें लास्ट टाइम भी बोले थे कि उनके अंदर ही इज इक्विप्ड बेसिकली टू ब्रिंग अबाउट सच अ ग्रेट रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट। तो क्वेश्चन ये रेज किया गया है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वेटिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। कई को इतने साल वेट कर रहे हैं, कई को नहीं आ रहे हैं अभी और ये बात भी बोल रहे हैं कि अब तक दुनिया के अंदर जो ट्रेजेडीज अभी भी जो फॉर एग्जांपल जो अटैक्स हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ये सब जस्टिफाई नहीं करता है क्या कि एक प्रिपेयर्ड लीडर आके एक सोल्यूशन दे दुनिया को तो अगर ऐसा नहीं है तो हम क्यों इस चीज के ऊपर अकीदा रखें। And the next objection raised is like a superhuman role, right? With reference, they ask how is it possible? एक single, जैसा मैं बोल रहे हैं, एक आदमी आके पूरी दुनिया को नजात दिलाएगा। How is it possible for an individual, however great he may be, to play such a decisive role in the world? It's going to be like a decisive role, when it is known that no individual by himself can make history or can he give an entirely new turn. तो बोल रहे हैं कि जनरली जो है द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ना, वो हिस्टोरिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। ओके एक इंडिविजुअल नहीं प्रोड्यूस करता जनरली, अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखेंगे तो बोल रहे हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल लाइज ओनली इन हिज कमिंग इन फोरफ्रंट in the given circumstances and affecting a practical change by selecting one of these multiple solutions ideally। तो एक सिंगल इंडिविजुअल ये लाएगा क्या, ये भी एक सॉर्ट ऑफ अ खाम ख्याली की तरह लग रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बिलीव, ऐसा बोल रहे हैं। और ये सब मेरे को बहुत अच्छे लगे बेसिकली अगर हम एक अकीदा फॉर्म कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पीपल हु ऑब्जेक्ट वो लोगों के व्यू से भी रीड करे, अंडरस्टैंड करे और देन हमारा एक पुख्ता अकीदा फॉर्म करे। अच्छा लगा ये, बेसिकली नाइस ऑब्जेक्शंस आर बीइंग रेज्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि मॉडस ऑपरेंडी क्या रहेंगी। कोई आएगा, कोई नजात दिलाएगा हमें, अभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करे तो भी we ask them for a proper solutioning, right? A modus operandi kya, how are we going to reach from destination A to destination B? So here they ask, what practical methods will be employed by that individual to bring about such a massive change, जैसे हमें बोल रहे हैं कि to ensure the final victory and justice, injustice को हरा देगा। जब हमको अभी भी बेसिकली मालूम कि इनजस्टिस जो है वो इट्स माइटी एंड इट्स डोमिनेटिंग फोर्सेस ऑपरेशन, उलांग के पास द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है। अभी भी हमें एक न्यूक्लियर वॉर चल रही है, हमको पता है कि उलांग के पास मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, साइंटिफिक पोटेंशियलिटीज है, साइंटिफिक वर्ल्ड को वो लोग लीड कर रहे हैं। पॉलिटिकल सोशल मिलिट्री पावर इज एट देयर डिस्पोजल। वी देयर इज नो डिनायल टू दिस फैक्ट दैट द ताहूत के पास ये सब है अभी। So बोल रहे हैं कि these are the questions which are frequently asked in these connections and repeated in different forms। वो question अलग-अलग तरीके से repeat करते हैं। They are basically not motivated merely by intellectual curiosity। दिमागी curiosity की वजह से नहीं हो रहा है। There are psychological reasons behind it। इंसान मान नहीं सक रहा है basically कि कैसा होगा ये जब दुश्मन के पास ये सब है हर चीज है। There's a strong feeling that there is a very little chance। बोल रहे हैं कि अभी जो करंट किसी भी आम आदमी को पूछ ले आप तो उन्हें बोलेंगे कि लिटिल चांस है ऑफ ओवरथ्रोइंग द प्रेजेंट वर्ल्ड सिस्टम व्हिच इज टू पावरफुल इनविंसिबल। साइंस की वजह से लोग मार्स को जा रहे हैं, उतने साइंटिफिकली एडवांस रहते हैं बेसिकली। सो बोल रहे हैं कि ये एक नेगेटिव फीलिंग्स इम्बाइब कर देता है इंसान के अंदर, ब्रिंग्स अबाउट स्केप्टिसिज्म, एक डाउट क्रिएट करता है इट लीड्स टू डिफीटिज्म एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक फॉर एग्जांपल आज का मुसलमान जो है नेचुरली अगर आप देखेंगे कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ईरान एंड बिकॉज ऑफ the forces fighting, we still we are in a good age, but general point of view से बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि इंसान शडर करता, हिल जाता ये वेरी आइडिया ऑफ अ वर्ल्ड चेंज कि हमें क्या करेंगे, इंजस्टिस को हराएंगे, हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, एक न्यू सिस्टम जस्टिस और इक्विटी को लेके आएंगे। मेंटल फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गया बेसिकली impels it out and all that। so basically these are very powerful questions which are being raised and आगे चल के इंशाल्लाह हमें वन बाय वन इसको डील करेंगे और इसके प्रॉपर सॉल्यूशनिंग देंगे। सो दीज आर बेसिकली द क्वेश्चंस, डोंट बी डीमोटिवेटेड, इंशाल्लाह देयर आर आंसर्स, प्रैक्टिकल आंसर्स टू दिस एज वेल। सो दैट्स माय पॉइंट फॉर टुडे। या शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फॉर द अपॉर्चुनिटी।